Hello, dear friends. Welcome you all in my YouTube channel, NAIN की पाठशाला. I would like to tell you, if you haven't yet subscribed my channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel, NAIN की पाठशाला. So today in this lecture, we are going to learn class 12th English lesson 4.1 History of Novel Part 3. Part 2 we have already seen. अगर आपने दो पार्ट नहीं देखे हैं तो links are given in description box. You can visit and watch those two parts. So, today in part 3 we are going to see important literary works and writers. Important literary works and writers हम लोग इस part 3 में देखने वाले हैं. So let's see. Very first, as we have seen, novel has started from 18th century. But 17th century की लास्ट में ही इसके जो तो साइंस दिखना स्टार्ट हो गए थे. Those some examples are number one, Pilgrim's Progress. Pilgrim's Progress is a novel written by John Bunyan. It was written in 1678. 1678 में लिखी गई थी Pilgrim's Progress. Then second novel हम लोग देखते हैं ओरुनोका और ओरुनोकू. Second novel Orunoku. Orunoku is written by Afraben in 1688. 1688 में लिखी गई ये नॉवल है ओरुनोकू. Then Robinson's Crusoe, Moll Flanders. These are two novels written by Daniel Defoe. Daniel Defoe की लिखी गई ये दो novels है Robinson Crusoe and Moll Flanders. Then Gulliver's Travels, very famous novel written by Jonathan Swift. It's very famous satire. If you have seen movie, एक movie थी, I think that Javed Jafri was the actor. The name of movie was जजंत्रम ममंत्रम. तो उस मूवी में दिखाया गया वन बिग पर्सन एंड द लैंड ऑफ स्मॉल पर्संस. सो इसी नॉवेल पर बनाई गई वो मूवी थी, गलिवर्स ट्रेवल्स पर बनाई गई वो मूवी थी, विच वॉज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट. देन अनदर पामेला एंड क्लैरिसा. दीज आर एपिस्टोलरी नॉवेल्स. अभी एपिस्टोलरी नॉवेल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स क्या है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे. एंड रिटन बाय सैमुअल रिचर्डसन. Then another novel we can say some famous novelists were here. Those were Henry Fielding, Lawrence Sterne, Tobias Smollett. These were some famous novelists of the time. Then there are some famous novelists who were known as stalwart novelists. अभी stalwart क्या होता है? Stalwart means as a backbone. जो सपोर्ट करने वाले होते हैं नॉवेल को, एक बैकबोन की तरह काम करते हैं. सो सपोर्टर्स कौन थे नॉवेल के? जो बहुत अच्छे बड़े बड़े जो राइटर्स थे, नॉवेलिस्ट थे. दोज वर चार्ल्स डिकन्स. देन सेकंड वॉल्टर स्कॉट. देन नेथानियल वालपोल. देन थॉमस हार्डी. देन विल्की कॉलिंस एंड एच.जी. वेल्स. दीज वर सम स्टॉलवर्ट नॉवेलिस्ट. दोज वर नोन एज backbone or supporter of novels. Then some 20th century novels. 20th century novels में थोड़ा change हुआ and it is marked by modern topics. Of 20th century we know that progress was going all over the world, globalization was happened, technology was there, rise in 20th century. So novelist ने अपने topics में भी थोड़ा change किया. Those were marked by modern topics, then innovative system and techniques and wider angles. So अपनी novels writing का angle जो है तो wide करते हुए, बढ़ाते हुए novelist ने novel लिखना start किया. कुछ innovative system and innovative techniques का उसमें इस्तेमाल किया. So 20th century famous novelist कुछ इस तरह से थे. Those were E.M. Forster, James Joyce, Joseph Conrad, Henry James, then George Orwell, Graham Greene, D.H. Lawrence, William Golding, Anthony Burgess. So these were some very important novelists of 20th century. They widened the circumference of novel. नॉवेल का जो सर्कमफरेंस है, जैसे पहले पर्टिकुलर टॉपिक्स पर नॉवेल लिखी जाती थी, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस. अब 20th सेंचुरी आते आते इन नॉवेल का एंगल जो है तो वाइड होता गया. नॉवेलिस्ट ने अपनी नॉवेल्स का एंगल वाइड किया और डिफरेंट टॉपिक्स पर नॉवेल लिखना स्टार्ट कर दी.
So these were some novelists of 20th century. They widened the circumference of the novel and gave importance to political, social and psychological and other modern issues. पहले हम लोग देखते हैं जैसे ओनली पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक, बट इन्होंने पॉलिटिकल, सोशल के साथ साथ साइकोलॉजिकल एज वेल एज अदर मॉडर्न इश्यूज को भी जो है तो अपने नॉवेल्स में इंपॉर्टेंस दिया एंड दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट दोज टॉपिक्स. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इमाइग्रेंट राइटर्स. इमाइग्रेंट मीन्स दूसरी कंट्री से आए हुए नॉवेलिस्ट जो दूसरी कंट्रीज में गए और वहां पर जाके उन्होंने नॉवेल्स लिखी. इसमें सबसे पहला नाम आता है सलमान रशदी का. ही वॉज फ्रॉम बांग्लादेश एंड नाउ ही इज राइटिंग इन इंडिया. इंडिया में जो है तो अभी राइटिंग करते हैं सलमान रशदी. सेकंड नेम इज ऑफ वी एस नाइपॉल. ही इज नाउ इन त्रिनिदाद. देन थर्ड नेम इज काजुओ इशिगुरा. नाम से ही पता चलता है ही इज इन जापान. So these were some important immigrant authors or important immigrant novelists who came from another country. Now let's see, in this writing of novels, women भी इसमें पीछे नहीं थी. We know that world में progress जो है तो continuously होती रहती है. So women also started learning and they also started writing. So some important women novelists are like जैसे they started giving their contribution in writing novels. Very first we can say the novel of Manners Evelina. It was written by Frances Burney. Frances Burney, her novel was Evelina. Then Gothic novels written by Anne Radcliffe, a novel based on science of the age, that is Frankenstein by Mary Shelley, are landmark novels. So जो भी novels के type आ रहे हैं, these all types we will see in our next part in detail. Then Jane Austen has been ruling over the minds of the people through her novels. Jane Austen भी एक बहुत important novelist है ladies में, who was, we can say that, ruling over the minds of people through her novels. बहुत अच्छी writer थी. Then Bronte sisters, that is Emily Bronte and Charlotte, have created their own place by their incomparable works. That is The Wuthering Heights and Jane Eyre. ये दो sisters थी, Bronte sisters, जिनका नाम है एमिली एंड चार्लोट. इनका वर्क एक अलग ही हाइट पर ले जाने वाला है. खुद की एक अलग पहचान इन्होंने बनाई है बाय देयर ओन वर्क, अपनी राइटिंग से. इनका राइटिंग वर्क है, हर नॉवेल्स वर देयर, द वुदरिंग हाइट्स एंड जेन आयर. देन मैरी एंड इवांस अलियास जॉर्ज इलियट. देखिए नाम दिखता है जॉर्ज इलियट. जॉर्ज इलियट अगर हम नाम देखते हैं तो ऐसे लगता है कोई जेंट्स और मेल राइटर है, बट जॉर्ज इलियट वॉज एक्चुअली अ फीमेल राइटर. हर नेम वॉज मैरी एन इवांस. जो जॉर्ज इलियट के नाम से लिखा करती थी. उस वक्त में ऐसे होता था कि लेडीज को ज्यादा लिखने पढ़ने की इतनी ज्यादा परमिशन नहीं थी, तो कुछ लेडीज ने जो राइटिंग की है एक जेंट्स नाम से की है. ऐसे लगता है कोई मेल लिख रहा है जॉर्ज इलियट, बट एक्चुअली शी वॉज फीमेल. हर नेम वॉज मैरी एन इवांस. सो शी रोट द नॉवेल्स रिफ्लेक्टिंग साइकोलॉजिकल इंसाइट. साइकोलॉजिकल नॉवेल इन्होंने लिखी है. देन वर्जीनिया वुल्फ इज द पायोनियर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन इंग्लिश नॉवेल. इंग्लिश नॉवेल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक की पायोनियर कहा जाता है, जिनका नाम है वर्जीनिया वुल्फ. देन अगस्ता क्रिस्टी क्रिएटेड हर ओन प्लेस बाय राइटिंग मेनी नॉवेल्स बेस्ड ऑन क्राइम. देन क्राइम पर लिखी गई नॉवेल्स थी एंड द नॉवेलिस्ट वाज अगस्ता क्रिस्टी. शी वाज आल्सो वेरी फेमस लेडी. देन हरक्यूल पॉयरॉट एंड मिस मार्पल आर एवरग्रीन डिटेक्टिव्स क्रिएटेड बाय हर. एक क्राइम नॉलेज एंड डिटेक्टिव नॉवेल्स जो उन्होंने लिखी है, इनका नाम है हरक्यूल पॉयरॉट एंड मिस मार्पल. These are some evergreen detectives जो उनकी क्राइम नॉवेल में हमें देखने को मिलते हैं. देन हार्पर ली, मार्गरेट एटवुड एंड टोनी मॉरिसन एंड अलाइस वॉकर हैव एलिवेटेड द ट्रेडिशन फर्दर टू प्रॉस्पेरिटी. ये कुछ राइटर्स है जिन्होंने और ज्यादा जो है तो नॉवेल का ट्रेडिशन प्रॉस्पर किया, इसे बहुत ज्यादा फुला फलाया. जिनका नाम है हार्पर ली, मार्गरेट एटवुड, Toni Morrison and Alice Walker. So these were some female novelists.